Chief Secretary. Yang kiri kanan perlu juga kaki Pak. Mundur belakang kiri Pak. Subhan. Insyaallah Bapak. Subhan. Dulu Pak kita salah amalkan alat majelis Pak. Ayo dulu Pak, Bapak. Dulu Pak. Jangan duduk dan insyaallah bila bayan berjalan, tolong jangan ada yang berdiri. Jangan ada yang berdiri, kita dulu dan tertib tawajud dengan insyaallah. Dan insyaallah di ujung daripada bayan ini akan diminta untuk duduk dengan atas agama, maka kita semua bersedia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa la yulad. Hayyan qayyuman aliman qadira. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وشفعنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تعبده عن محارم الله أو كما قال عليه السلام. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چمکانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو رتبہ و مرتبہ دینے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اپنی رضا دینے کے لیے اللہ نے نبیوں والا کام عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت والا کام عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. ہم سارے کے سارے اسی کام کی نسبت پر جڑے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے واقعی میں اس کام کو اپنا کام بنا لیا اور اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا تو پورے انڈونیشیا میں کیا پورے عالم میں اللہ ہم کو چمکا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli wa sallim ala rasulihil karim amma ba'du. Inilah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sebelum insyaallah wassalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita usaha Nabi, usaha para nabi dan usaha khatmin nubuwah. Untuk apa? Untuk mensukseskan kita
mencemerlangkan kita, memberikan kepada kita derajat martabat yang tinggi, dan juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri kita kerja para nabi. Apabila kita menjadikan usaha ini sebagai pekerjaan utama kita, maka bukan hanya di negeri kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencemerlangkan kita, mencemerlangkan nama kita di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negeri kita, tapi di seluruh dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan harumkan nama kita, Allah akan cemerlangkan kita. Allahu Akbar. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں کی کوئی عزت نہیں تھی. گرے ہوئے لوگ سمجھے جاتے تھے، ذلیل سمجھے جاتے تھے. جہاں تک کہ اس زمانے کی حکومتیں قیصر و کسریٰ کی ان پر حکومت کرنے کو توہین سمجھتی تھی. ان عربوں کو اپنی محتاجی کے نہیں بلکہ محتاجی در محتاجی ان کو دے رکھا تھا. کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. اور اس دور کو دور جہادت کہا جاتا تھا. یہ جہادت کا دور جس میں انسان کچھ نہیں پہچانتا، لیکن اللہ کو جب عزت دینا ہوا اور اللہ کو چمکانا ہوا، اللہ کو سارے عالم میں محبوب بنانا ہوا، تو اللہ نے مکہ مکرمہ میں سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا، جس کی کسی کو امید نہیں تھی. یہود یہ جانتے تھے کہ وہ آخری نبی ہمارے میں آئے. نصارہ کہتے تھے وہ آخری نبی ہمارے میں آئے گا. ساری دنیا آخری نبی کے انتظار میں تھی، اور اللہ نے وہاں پیدا کیا جہاں کوئی نہیں چاہتا. اور مکہ مکرمہ میں اپنے نبی کو پیدا کر کے مکہ والوں کو قیامت تک کے لیے عزت عطا فرما دی. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduk Mekah Mukarramah, orang-orang Arab, mereka adalah orang-orang jahiliyah. Dan zaman itu dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Mereka tidak hanya jadi negara-negara ketika itu Romawi Persia, mereka tidak ingin menjajah, tidak mau menguasai Mekah, tidak mau menguasai Jazirah Arab. Kenapa? Karena penduduknya yang terbelakang, dianggap terbelakang, bahkan untuk dijadikan jajahan pun mereka menganggapnya tidak pantas, karena dianggapnya penduduk Jazirah Arab itu adalah bawahannya bawahan, jajahannya jajahan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu orang-orang Yahudi mereka berharap Nabi yang terakhir akan lahir dari kalangan mereka, sementara orang-orang Nasrani juga berharap Nabi akhir zaman lahir dari kalangan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lahirkan dari kalangan Yahudi Nasrani, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan dari kota Mekah Mukarramah, penduduk Mekah Mukarramah. Untuk apa? Untuk memuliakan orang-orang Mekah. Masya Allah. Maka dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan orang-orang Mekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak ingin mensukseskan, mencemerlangkan orang-orang Mekah di hadapan bangsa-bangsa di seluruh dunia. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 40 سال میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا. نبی بننے سے پہلے ہر ایک آپ سے محبت کرتا تھا، ہر ایک آپ کا اکرام کرتا تھا، ہر ایک آپ کو سچا کہتا تھا، ہر ایک آپ کو عادل کہتا تھا، اس لیے کہ آپ بچپن سے عدل انصاف والے تھے. حضرت حلیمہ داعیہ نے جو حضور کو لے لیا، آخر میں اس بچے کو پایا. سارے مالداروں کو دوسری دائیوں نے لے لیا تھا، حلیمہ کو کوئی دائی کوئی بچہ نہیں ملا.
यतीम समझकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब छोड़कर चले गए। इस यतीम बच्चे के पालने में क्या मिलेगा? कोई इकराम, कोई इनाम नहीं मिलेगा। जब बीबी हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलो जिसको सब छोड़ के गई हैं इसी को उठा ले। उसका उठाना क्या था और अपनी गोद में लाना क्या था? अल्लाह ताला ने हलीमा की दोनों छातियों को दूध से भर दिया। जो उनकी भूख की वजह से, खाना न खाने की वजह से और तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से उनका पेट नहीं भरता था और उनकी छाती दूध से खुश्क हो गई थी और अपने बच्चे का भी पेट नहीं भर पाती थी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली बरकत ज़ाहिर हुई कि हलीमा सादिया ने हुजूर को अपनी गोद में लिया और अपनी दाहिनी छाती से लगाया तो दोनों छातियों में दूध भर गया। फिर उन्होंने चाहा कि लाओ दूसरी छाती में भी इनका मुंह लगवा ले ताकि उसमें भी खूब बरकत हो जाए। तो हुजूर ने दूसरी छाती को मुंह नहीं लगाया। क्यों? अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया। ये आपका बचपन का इंसाफ है, ये आपका बचपन का अदल है, ये आपके बचपन का रहम है, ये आपके बचपन की मदद है कि आप बचपन से ही लोगों के मददगार थे, लोगों के खैरखा थे, लोगों पर रहम करने वाले थे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले थे और सबसे बढ़कर अदल और इंसाफ करने वाले थे। तो आपने दूसरी छाती का दूध नहीं पिया। अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से हजरत हलीमा की दोनों छातियां दूध से भर दी। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu dicintai oleh semua orang. Orang-orang mengatakan beliau adalah orang yang adil, beliau adalah orang yang jujur, yang amanah, yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama, membantu orang lain, membantu yang lemah. Sudah masyhur, terkenal, sehingga semua orang mencintai beliau, semua orang menyukai beliau. Bahkan dari kecil, dari sejak lahir, ketika beliau lahir, kemudian biasa dari orang-orang kampung datang untuk menyusui, dan orang-orang Mekah ketika itu dari kota Mekah pun bayi-bayi mereka disusukan kepada orang-orang kampung. Maka orang-orang datang telah mengambil bayi-bayi dari keluarga yang kaya, tapi bayinya Rasulullah SAW tidak ada yang mau mengambilnya karena anak yatim, nggak punya apa-apa. Kalau menyusui beliau nanti dapat apa? Orang-orang nggak ada yang mau mengambil beliau. Dari kabilah itu yang paling datang terakhir saja Halimah Sa'diyah, karena nggak ada bayi lagi, yang tinggal hanya bayi baginda Rasulullah SAW. Maka daripada pulang dengan keadaan tangan kosong nggak membawa bayi, ya bawa ini anak yatim, dibawa. Tapi begitu diambil, dipangku, Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberkahan. Yang tadinya Sayyidah Halimah Sa'diyah juga dari keluarga yang tidak mampu, kekurangan makanan, sehingga ASI-nya itu tidak bisa banyak. Anaknya sendiri pun tidak mendapatkan ASI yang cukup. Tapi begitu mengambil baginda Nabi SAW di pangkunya, maka Allah Subhanahu wa taala penuhi kedua puting susunya itu dengan Allahu Akbar. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk putranya sendiri pun mencukupi, untuk Rasulullah SAW pun mencukupi. Dan kemudian Nabi SAW minum dari yang satu tidak mau. Artinya beliau biarkan yang satu untuk saudara sesusuannya, yang satu beliau minum. Kenapa? Jadi dari bayi beliau telah menunjukkan akhlak yang mulia, berbagi, tidak diambil semuanya, Allah. tapi memuliakan yang lain, ikram kepada sesama saudara sesusunya. Dan itu menunjukkan bahwa sifat adilnya Nabi SAW, bahwa beliau adalah manusia yang adil. Dari semasa bayi beliau sudah menunjukkan akhlak-akhlak mulia, membantu, menolong, menyayangi sesama,
menghargai sesama, menunaikan hak sesama, berbuat adil. Itu yang ditujukan Nabi SAW sejak masih bayi. Allah. मेरे अजीजों और दोस्तों, अल्लाह ने पहली बरकत दिखा दिया। हलीमा सादिया अपने घर से बच्चा लेने के लिए सबसे पहले चली, लेकिन सवारी की दूसरे होने की वजह से वो धीरे धीरे चल रही थी, यहाँ तक कि ये सबसे आखिरी में पहुंची। और सारे बच्चों को लोगों ने ले लिया था, लेकिन जब हुजूर को गोद में लिया, एक तरफ तो दूध छाती से भर गई और दूसरी तरफ जिस ऊँटनी पर आपको लेकर बैठी वो ऐसा चलने लगी जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। चली थी सबसे आखिर में और सारी दाइयों को पीछे कर दिया। तो सबकी जुबान पर ये बात आई, हर एक दाइयां जोर जोर से चिल्लाने जाकर कहने लगी, हलीमा सादिया को बरकत वाला बच्चा मिल गया, बरकत वाला बच्चा मिल गया। अल्लाह ने उस बच्चे की बरकत से हलीमा का घर बरकतों से भर दिया। Kemudian keberkahan kedua yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada keluarga Sayyidah Halimah Sa'diyah, beliau datang ke Mekah kan terlambat. Kenapa paling lambat, paling akhir? Karena kendaraannya paling lambat jalannya. Tidak benar sebagaimana beliau dari keluarga yang tidak mampu. Begitu juga untuk makan sehari-hari pun nggak mencukupi, apalagi untuk ontanya, sehingga ontanya jalannya pelan-pelan, sehingga sampai di Mekah itu paling lambat dan mendapatkan bayi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu beliau mengambilnya, keberkahan pertama tadi Allah Subhanahu wa taala langsung penuhkan asinya, yang kedua onta yang dimilikinya langsung paling kencang jalannya, sehingga semua teman-temannya yang sudah jalan duluan itu disalib semuanya, dilewati semuanya. Sehingga orang-orang mengatakan, oh Halimah telah mendapatkan bayi yang penuh dengan berkah, dia telah mendapatkan bayi yang telah penuh dengan keberkahan. Allah. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे, उनका घर बरकतों से भर गया। उसके बाद जब वो अपनी बकरियां चराने जाते थे और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ा बड़े हो गए, तो वो भी हलीमा सादिया की बकरियां चराने जाते थे। तो वहां अल्लाह चारा उगा देता था, घास पैदा कर देता था और थोड़ी देर में उनके पेट भर जाते थे। तो दूसरे लोगों ने कहा अपने अपने लोगों से, तुम भी अपने जानवर वहीं चराने के लिए ले जाओ जहां हलीमा के जानवर चलते, ताकि तुम्हारा भी पेट भर जाए। तो हमारे नबी ऐसे बरकत वाले आए कि जिसके घर ठहरे, जिसके मेहमान बने, जिसका दूध पीने लगे, वो भी बरकत वाली हो गई, उनका घर भी बरकत वाला हो गया। यहाँ तक कि दूसरे लोगों के जानवर भी, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हलीमा सादिया की बकरियां चल रही थी, सारे लोग वहाँ भेजने लगे, तुम भी वहीं चलाओ। तो अल्लाह ने हुजूर की बरकत से उनका Setelah sampai ke rumah, maka rumahnya pun juga langsung penuh dengan keberkahan. Kemudian yang tadinya kambing-kambingnya juga ketika itu di tempat di kabilah saat terjadi kekeringan, tidak tumbuh rumput-rumputan. Maka begitu Rasulullah SAW sampai di perkampungan itu, dan Nabi SAW juga mulai besar, dan kemudian Nabi SAW juga mulai membantu menggembala kambing milik Halimah Sa'diyah. Maka kemana Nabi SAW menggembala kambing, di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar tumbuh rumput-rumput dengan suburnya, sehingga kambing-kambingnya itu nggak perlu berumput jauh, nggak perlu digembalakan ke tempat-tempat yang jauh, dekat-dekat saja sudah cepat kenyang, sudah cepat kembali. Sehingga tetangga-tetangga melihat itu juga, kita bareng-bareng aja dengan kambing-kambing Halimah, biar kambing kita juga makan dari situ. Akhirnya semua tetangga-tetangganya juga, orang kampung juga, kalau penggembala nggak mau jauh-jauh dari kambing-kambing Halimah Sa'diyah. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW dimanapun beliau singgah, rumah itu penuh dengan keberkahan. Wanita yang mengambil beliau, menyusui beliau, maka Allah Subhanahu wa taala berkahi asinya, Allah berkahi kambing-kambingnya semua.
Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dengan mengambil zatnya, jasadnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप अंदाजा लगाओ जब आपकी जात में इतनी बरकत है और इतना ज्यादा हर लायक की नेमतें हैं, तो बताओ 40 साल की तरबियत के बाद, मक्का में रहने के बाद, जब आपको अल्लाह ने नबी बनाया तो नबी होने की क्या क्या बरकतें हुई, फिर नबी वाले काम में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है, कितनी रहमत रखी है, कितनी कामयाबी रखी है, कितनी इज्जत रखी है। अगर हमारे सीनों पर इस दावत की हकीकत खुल जाए तो हम में से कोई भी दूसरे काम की तरफ रुख न करे। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan kalau bayinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengandungi keberkahan yang begitu besar, setelah 40 tahun beliau tinggal di Mekah Mukarramah, lalu beliau diangkat menjadi nabi, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerja kenabian, maka betapa besarnya keberkahan, rahmat, kemuliaan dan kesuksesan yang terdapat di dalam usaha nubuwah, di dalam kerja nubuwah itu. तो अल्लाह ताला ने दावत के काम में बड़ी जाज़बियत रखी है, बड़ा नूर रखा है, बड़ी हिदायत रखी है, बड़ी कामयाबी रखी, बड़ी इज्जत रखी। जब तक ये दावत का काम इंडोनेशिया में नहीं आया था, कोई इंडोनेशिया को नहीं जानता। बहुत कम लोग जानते थे इंडोनेशिया भी एक मुल्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये काम आया और जकार्ता वालों ने इस्तकबाल किया, कहाँ वालों? जकार्ता वालों ने इस्तकबाल किया और उस काम पर अपने जान लगाए, अपने माल लगाए, अपना वक्त लगाया, कुर्बानियाँ दी और 4-4 महीने के लिए हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में वक्त लगाया और फिर काम बढ़ा। तो उन्होंने जगह 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 पूरे इंडोनेशिया में छोटे छोटे मरकज बना दिए। ये सारे के सारे मरकज जकार्ता ने बनाया। किसने बनाया? तो गोया इंडोनेशिया के जितने मरकज हैं वो सब जकार्ता मरकज के ताबे हैं। Allahu Akbar. जकार्ता मरकज हिंदुस्तान निजामुद्दीन की ताबे है। समझे? इसलिए वहाँ बरकत हुई और वहाँ की बरकत से सारी दुनिया इंडोनेशिया को जाने लगी। इंडोनेशिया की जमातें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में जाने लगी और दुनिया के मुल्कों में जाने लगी और अल्लाह ताला ने इंडोनेशिया को एक कबूलियत, एक मकबूलियत, एक हैसियत अता फरमाई। अब जहाँ ये जाते हैं वहाँ ये मोहब्बत की निगाह से देखे जाते हैं, इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं और ये बात मशहूर हो गई पूरे आलम में, अगर कोई इस्लाम में बड़ा मुल्क है और इस्लाम की ज़्यादा तादाद है और इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं तो वो इंडोनेशिया में हैं। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam usaha nubuwah ini ada daya tarik, ada nur, ada hidayah, ada keberkahan, ada rahmat, ada kemuliaan, ketinggian. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua Allah letakkan dalam usaha nubuwah ini. Maka siapapun yang dia usaha dan ambil bagian dalam usaha nubuwah dan usaha agama ini, Allah akan berikan semua itu kepada dia. Ada sekalian dulu sebelum usaha dakwah datang ke Indonesia, ya sedikit orang yang kenal Indonesia. Kemudian jamaah datang ke Indonesia, awal-awal mereka datang diistiqbali oleh orang-orang Jakarta. Kemudian orang-orang Jakarta mereka mulai mengeluarkan keluar di jalan Allah, mengorbankan diri, waktu dan hartanya, dan mereka istiqbal, ambil bagian dalam kerja agama, keluar 4 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh. Ya Allah. Kemudian setelah itu balik lagi ke Jakarta dan kemudian membentuk markas-markas di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, dibentuk markas-markas. Maka markas-markas yang ada di seluruh Indonesia itu tabe kepada markas Jakarta. Allahu Akbar. Menunjuk
sebagai markas itu markas kebun jeruk. Di seluruh Indonesia markas-markas yang menuju itu sebagai markas adalah markas kebun jeruk Jakarta. Dan kemudian markas Jakarta yang menuju yang menentukan adalah masa kita di Nizamuddin. Nah, maka markas kebun jeruk tabi kepada Nizamuddin dan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia tabi kepada markas kebun jeruk. Maka setiap dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tampakkan keberkahannya meskipun ya masjid yang sederhana kecil, tapi alhamdulillah telah berangkat jamaah-jamaah ke seluruh dunia. Benar ya Allah. Dan ini jamaah-jamaah kita telah bergerak ke ujung-ujung dunia, di setiap negara ada jamaah kita. Dan hari ini pun masyhur di seluruh dunia bahwa Indonesia sebagai negara terbesar dengan penduduk, negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Dan mereka semua juga mengakui kalau ingin melihat amalan agama Islam, orang-orang Islam yang mengamalkan agama, maka lihatlah orang-orang Indonesia. Pergilah ke Indonesia, di sana orang-orangnya, orang-orang yang punya akhlak, orang-orang yang mengamalkan agama. मेरे अजीजों और दोस्तों, जहाँ से काम चलता है और जहाँ से काम शुरू होता है, उस जगह की मोहब्बत, वहाँ के लोगों की मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में पैदा करता है। Beliau katakan bahwa tempat yang di tempat itu dimulai usaha agama ini dan orang-orang buat pengorbanan di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam hati-hati manusia rasa cinta kepada tempat itu dan orang-orang yang ada di tempat itu. Benar ya Allah. अब हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी जगहें थी, बड़े बड़े मदरसे थे, बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, लेकिन अल्लाह ताला को निजामुद्दीन से काम लेना था। Di India banyak pondok-pondok pesantren. कोई उठेगा नहीं, सब बैठे रहो। Duduk, jangan ada yang berdiri, silakan. मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना गियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब निजामुद्दीन में काम शुरू किया, और वो भी तलबा के जरिए से किया, जो आपके पास मेवात के कुछ लोग तलबा पढ़ते थे, उन्होंने उनसे काम शुरू किया। और जब उलमा के पास ये काम गया तो बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा हिंदुस्तान में मौजूद थे, हर सूबे में मौजूद थे, सबसे ज़्यादा यूपी में थे और देवबंद और सहारनपुर के इलाके में थे। वो सारे उलमा ने कहा काम तो बहुत अच्छा है, मौलवी गियास ने बहुत अच्छा काम चलाया है, लेकिन इस जमाने में इसको कौन करेगा? तो मौलाना गियास साहब जो फरमाते थे, आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह कराएगा। कौन कराएगा? तो आज सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सारी दुनिया में अल्लाह ने कराया। Maka hadirin dirahmati Allah SWT, awal-awal Syekh Ilyas rahimahullah memulai usaha ini bersama dengan beberapa santri yang sederhana dari orang-orang mewat yang sudah berumur, yang dibawa ke Nizamuddin belajar, diajari ilmu agama. Bersama dengan mereka Syekh Ilyas rahimahullah memulai usaha dakwah ini. Jamaah-jamaah diberangkatkan. Kemudian beliau mengunjungi ulama-ulama besar yang ketika itu kebanyakan ulama ada di UP, di Deoband, di Saharanpur. Beliau datang ke ulama-ulama yang ada di sana, menawarkan ataupun menyampaikan, menjelaskan tentang usaha yang beliau buat ini. Para alim ulama mengakui apa yang Maulana Ilyas buat itu adalah perkara yang hak, dan ini adalah apa yang dibuat Nabi dan sahabat dulu. Tapi di zaman sekarang ini siapa yang mau melakukan? Itu pertanyaan ulama-ulama ketika itu. Maka Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan kepada para alim ulama bahwa tuan-tuan doakan saja. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjalankan. Maka benar Allah Subhanahu wa taala jalankan.
Sekarang ini bukan hanya di India, tapi Allah telah jalankan usaha ini di seluruh dunia. अब निजामुद्दीन में जो काम शुरू हो गया और मौलाना रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात का सफर किया और मेवाती लोग आने लगे और छोटी सी मस्जिद थी वो भरने लगी। तो लोगों ने मौलाना रियाज रहमतुल्लाह अलैह की गैर मौजूदगी में, वो कहीं सफर पर गए हुए थे, उस छोटी सी मस्जिद को तोड़ दिया और बड़ी मस्जिद बनाने लगे। अब बड़ी जगह बनाने लगे, वो भी बहुत बड़ी नहीं बनी, बहरहाल छोटी से तो बड़ी हो गई। मौलाना रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ तशरीफ लाए और देखा कि लोग हमारी मस्जिद को गिराकर बना रहे हैं और उसके आसपास कमरे भी बना रहे हैं, तो कहने लगे ये जो कमरे तुम लोग बना रहे हो ऐसा बनाओ कि सारी दुनिया यहाँ आएगी। ठंडी मुल्क के लोग आएंगे, गर्म मुल्क के लोग आएंगे, यूरोप के लोग आएंगे, अफ्रीका के लोग आएंगे, अरब के लोग आएंगे, इंडोनेशिया के लोग आएंगे, मलेशिया के लोग आएंगे, फिजी और जापान के लोग आएंगे। तो इनके लिए कुछ हवादार कमरे बनाओ जिससे वो ठंडी मुल्कों के लोग आएंगे तो उनको हवा मिले। तो जो लोग वहाँ थे वो मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। निजामुद्दीन में तो दिल्ली का आदमी नहीं आ रहा और ये कह रहे हैं सारी दुनिया के लोग आएंगे। लेकिन अल्लाह ने आज दिखला दिया कि 175 मुल्क दुनिया में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 175 मुल्क के लोग निजामुद्दीन में आ चुके हैं और निजामुद्दीन से जमातें भी उन सारे मुल्कों में भेजी जा चुकी हैं और इंडोनेशिया को भी बहुत सारे मुल्कों के तकादे दिए जा रहे हैं। क्यों? यहाँ वालों ने कुर्बानी दिया, जकार्ता वालों ने कुर्बानी दिया, काम को आगे बढ़ाया तो मुल्क में काम फैला और जगह जगह मुल्क में जकार्ता वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने छोटे छोटे मराकज़ कायम किए। ये सारे के सारे मरकज़ जकार्ता के ताबे हैं। जिस तरह सारी दुनिया के मराकज़ निजामुद्दीन के ताबे हैं, उसी तरह से जकार्ता के सारे मराकज़ छोटे हों या बड़े हों वो सब जकार्ता के ताबे। Maka hadirin sekalian, setelah usaha dimulai, kemudian orang-orang lewat mulai berdatangan ke Nizamuddin, maka masjid sudah penuh. Masjid kecil dulu, hanya 2-3 sof itu masjid. Kalau melihat masjid asli Nizamuddin itu yang tengah itu, yang berdampingan dengan ruang musyawarah itu aja 2-3 sof, itulah masjid asli. Sudah penuh. Maka ketika Maulana Ilyas rahmatullah sedang bepergian lama, maka mereka orang-orang lewat memperbesar masjid, diperluas, ditambah. Maka ketika beliau pulang, mereka sedang membangun, sedang merenovasi masjid. Maka beliau mengatakan, kalian buat nanti di atas ini, di sebelah sini ruangan-ruangan yang ada jendelanya. Karena apa? Nanti akan datang orang-orang dari negara-negara dingin, dari negara-negara yang panas. Allahu Akbar, Masya Allah. Akan berdatangan. Maka orang-orang lewat ketika mendengar Maulana Ilyas bilang begitu pada tertawa, wah ini orang sudah tak beres. Astagfirullah. Delhi aja gak ada yang mau datang kemari. Masya Allah. Orang Delhi gak ada yang mau kemari, kita ada orang-orang lewat yang menuhi Nizamuddin. Kok ini bilang katanya orang Eropa mau datang, Amerika mau datang, Asia mau datang. Masya Wah ini Allah. orang gak bener. Ditertawakan Maulana Ilyas berkata seperti itu. Tapi beliau berkata seperti itu dengan basirah, dengan keyakinan bahwa usaha yang beliau buat akan sampai ke ujung-ujung dunia dan dari dunia akan datang ke Nizamuddin. Dan terbukti 175 bahkan 200 lebih negara di seluruh dunia, setiap negara telah datang ke Nizamuddin dan dari Nizamuddin telah dihantar jamaah ke negara-negara tersebut. Allah Subhanahu wa taala buktikan apa yang beliau katakan. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk juga negeri Indonesia ini diberi takaza. Artinya jemaah-jemaah yang dihantar ke negara-negara itu meskipun itu dari Indonesia, tapi kan dengan persetujuan Nizamuddin. Semua jemaah yang kita kirimkan ke negara jauh melalui Nizamuddin. Maknanya kita berangkat ke negeri jauh pun atas nama Nizamuddin sampai ke negara-negara tersebut. Mungkin ke
negara itu jemaah dari India belum sampai, tapi jemaah dari negeri kita sampai, tapi jemaah kita yang berangkatkan siapa? Dari Nizamuddin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh markas-markas yang ada di seluruh dunia itu tabiatkan Nizamuddin. Dan kemudian karena kasih sayangnya, lapang dadanya, dan teman-teman para penanggung jawab di Jakarta yang mereka ingin agar kebaikan ini tersebar di mana-mana, maka markas Jakarta telah membentuk markas-markas yang ada di daerah-daerah. Maka markas yang ada di daerah-daerah, baik itu markas kecil ataupun besar, semuanya itu adalah tabe kepada Jakarta. Dan Jakarta mereka memikirkan bagaimana dari markas-markas ini dibentuk jemaah-jemaah coba ke seluruh dunia. Maka kemudian kita antarkan tafakutnya ke Nizamuddin, dari Nizamuddin diputus ke negara mana, maka jemaah itu hakikatnya adalah jemaah yang diberangkatkan Nizamuddin untuk datang ke negara tersebut. Nah, hati yang dirahmati Allah SWT, seperti itulah urutan-urutan. यानी 45 साल पहले जब हमारे इंडोनेशिया में तो जकार्ता एक छोटी सी नदी थी, उसके अगल बगल एक कमरा था, लेकिन काम बढ़ा और सारी दुनिया आने लगी, सारा इंडोनेशिया आने लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 वो मरकज भी बढ़ा। Dulu 40-45 tahun yang lalu waktu pertama kali kami datang ke Indonesia, markas Jakarta masih kecil. Masjid yang asli hanya berapa kali berapa itu, 5 kali 5 atau 6 kali 6 itu, sama ada kamar di sebelahnya yang sekarang menjadi kamar taskin IPB, kamar transportasi, itu kamar itu saja. Nah, tapi alhamdulillah maka jemaah mulai berdatangan, mulai penuh, maka sekarang mulai diperluas, mulai diperbesar. उस वक्त कोई जकार्ता को मरकज भी नहीं जानता था, जकार्ता में भी कोई मरकज। Ketika itu orang Jakarta pun nggak tahu kalau di Jakarta itu ada markas. हम लोग मस्जिदों में जाते थे, गश करते थे, थोड़े लोग जमा होते थे, कोई जानता नहीं था तबलीग क्या। Kami pergi ke masjid-masjid, jauhlah kami khususin jumpa orang pun nggak tahu apa itu tabligh. Allah. अल्हम्दुलिल्लाह मैदान के लोग और जकार्ता के कुछ लोग जमात में जाने, Maka alhamdulillah kemudian orang-orang Medan dan beberapa orang dari Jakarta mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. मैदान वालों ने ज्यादा कुर्बानी नहीं दिया तो उसको उतनी महसूसियत नहीं मिली। Beliau katakan orang-orang Medan mereka tidak buat pengorbanan yang besar, karena itulah maka tidak mendapatkan mahbubiyat di dalam hati-hati manusia. और जो हिंदुस्तान के लोग वहाँ रहते थे मैदान में, वही लोग कामिल थे। Yang ikut ambil bagian dalam kerja dakwah itu ya orang-orang keturunan India yang tinggal di Medan. मलाई कौम में कोई नहीं जुड़ा Orang-orang Melayu penduduk asli nggak ada yang ambil bagian. और काम वहाँ फैलता है जब वहाँ के मकामी लोग जुड़ते हैं। Padahal kerja itu akan hidup di suatu tempat apabila penduduk asli orang tempat itu ambil bagian. जकार्ता में जो काम बढ़ने की बुनियाद पैदा हुई तो वहाँ के लोग मलाई कौम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकले। Nah, sementara sebab majunya kerja dakwah di Jakarta karena penduduk asli orang Melayu mereka ambil bagian keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. और सन 72 में सबसे पहली जमात मलाई लोगों की निजामुद्दीन में गई। Tahun 72 jemaah pertama dari Melayu datang ke Nizamuddin. अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जल्दी थोड़े दिन में, थोड़े साल में इतना बड़ा काम हुआ जो इंडोनेशिया में बढ़ा वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ा। Maka dalam waktu yang singkat kami lihat perkembangan usaha dakwah di Indonesia begitu cepat, begitu pesat, yang mana kami tidak melihat di negara lain manapun. और हर एक की जुबान पर इंडोनेशिया छा गया। Dan di setiap negara di seluruh dunia mereka memuji-muji Indonesia. Allah. मेरे दोस्तों, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह के करम से पता नहीं किसकी दुआ की बरकत से और किसकी कुर्बानी की बरकत से अल्लाह ने इस मुल्क में काम चला लिया। Maka ini semata-mata karunia Allah, fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu karena tetesan air mata siapa, enggak tahu karena doa siapa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan, telah jalankan usaha ini di negeri ini. और हर जजीरे में और हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम शुरू हो गया। Dan alhamdulillah usaha telah mulai, telah ada di setiap kota dan di setiap pulau yang ada di Indonesia.
और बड़े बड़े इज्तिमा भी माशाअल्लाह इंडोनेशिया ने कर लिया। Dan alhamdulillah Indonesia telah menyelenggarakan istimewa yang dengan jumlah yang besar. अब इतना बड़ा इज्तिमा और इतने ज्यादा लोग तबलीग में लगा हुआ, ये देखकर शैतान कैसे बर्दाश्त करेगा। Maka dengan melihat perkembangan yang begitu pesat, adanya istimewa yang besar, maka setan gak terima. Benar ya Allah. दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिया। Maka setan mulai memasukkan was-was, meniupkan was-was ke dalam hati-hati pekerja dakwah. अब तो और भी कोई मर्कज होना चाहिए। Maka sekarang dia ingin, wah ini harus buat markas lagi yang baru. Astagfirullahaladzim. शैतान की तरफ से वसवसा Itu adalah was-was dari setan. कभी ऐसे वसवसे कामयाब नहीं होते। Was-was seperti itu nggak akan pernah berhasil. Benar ya Allah. हम यकसू होकर, एक दिल होकर, एक नीयत होकर, एक दिमाग होकर, एक जिस्म होकर जकार्ता सबको काम मिला है, जकार्ता ही हमारा मर्कज रहेगा। Maka sekarang kita hendaknya kerja dengan fokus, tawajuh, badan kita, fikir kita, otak kita, hendaknya kita satukan. Kita dapat kerja dakwah ini melalui Jakarta Kebon Jeruk, maka kita hanya rujuk hanya ke Kebon Jeruk. Insyaallah Akbar. आज जो लोग अपने आप को बड़ा समझते थे और निजामुद्दीन छोड़ के चले गए, तो आज दुनिया में कोई उनको नहीं पूछ रहा है। Hari ini orang yang menganggap dirinya orang besar, kemudian dia coba meninggalkan Nizamuddin. Hari ini tidak ada tempat bagi mereka di dunia. और निजामुद्दीन में कोई नुकसान नहीं हुआ। Astagfirullah. Dan tidak ada kerugian kekurangan sedikit pun di Nizamuddin. और काम में कोई नुकसान नहीं हुआ। Dan Benar ya tidak Allah. merugikan kerja sedikit pun. Benar ya Allah. 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। Bahkan 20 kali lipat maju malah. Allah. अभी इस लॉकडाउन के अंदर कम से कम 70 जमातें तो औरतों की बाहर मुल्कों में गई। Dalam masa lockdown kemarin 70 jemaah Masturah berangkat ke negeri jauh. सोचो, और सैकड़ों जमातें मुल्कों में मर्दों की गई। Dan begitu juga jemaah rijal dihantarkan ke negara-negara yang jumlahnya ribuan. अल्हम्दुलिल्लाह निजामुद्दीन खुला हुआ है और 24 घंटे के अमल वहाँ हो रहे हैं। Alhamdulillah sekarang Nizamuddin sudah buka dan sudah hidup amalan 24 jam. Allahu Akbar. इसलिए आप हजरात अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए दूसरे मर्कज का। Karena itulah maka kita jangan ambil pusing, jangan ambil perhatian. Nggak usah dipusingkan kalau ada orang buat markas lagi. Astagfirullahaladzim. ये मर्कज रहेगा और क़यामत तक अल्लाह उसको चलाएगा। Markas kita ya tetap Kebon Jeruk Jakarta dan Allah akan jalankan hingga hari kiamat. Benar ya Allah. और कोई भी बात हो, हम किसी की बात नहीं मानेंगे जब तक कि निजामुद्दीन से कोई बात ना हो। Dan berita ataupun kabar dari siapapun nggak akan kita dengar kecuali datang dari Nizamuddin. निजामुद्दीन पर ने पूरे आलम के एतबार से असर करा दिया। Karena Nizamuddin telah ditetapkan oleh Allah SWT yang Nizamuddin adalah markas kita, markas seluruh dunia. इसलिए निजामुद्दीन फैसला करेगा। Karena itulah semua keputusan itu ya yang datang dari Nizamuddin. मरकज बनाने का हक, शाहगुजारी बनाने का हक और बाहर मुल्कों में जमातों में भेजने का हक सिर्फ निजामुद्दीन को हासिल है। Jadi untuk memulai membuka malam Sabtuzari, markas itu harus dengan persetujuan Nizamuddin. Begitu juga jamaah-jamaah yang berangkat ke negeri jauh, rutenya harus dengan persetujuan Nizamuddin. इसलिए कोई भी इस बात का न ऐलान करे न चर्चा करे कि जकार्ता के अलावा भी कोई मरकज है। Maka karena itulah nggak perlu kita ngomong-ngomongkan lagi bahwa ada markas selain Jakarta. Benar ya Allah. काम बहुत देर में जिंदा होता है और मिनटों में खत्म हो जाता है। Coba kerja